will be what? Host octet. Yes or no? Getting the Yes. calculation? Yes, sir. Everyone getting the calculation? How we are finding out? Yes, sir. For example, we are having our second IP address 150.10.0.1. Focus on the first value 150. Which class IP? B. Which class IP? Class B. Class Why? B. Why class B. B? Why class B? More than 128 and less than 192. Somewhere. Yes. So in between this 150 to 191, this is 150 coming, right? That is why exactly it is a class B address. So what is the class B subpass says? How many octets we have network in class B subnet mask? How many network octets we have? First, second. That is 255, right? 255. 255 means one network only. This is your network octets. And this is your what? 0.0. 0 means what? Host. Host. Okay. So we have two octets for host and two octets network. So it means the first two octets will be what? Network. And the last two octet will be host. Like that. Okay. Getting it right? Any questions, any doubts? Anyone? सर बोलो. हाँ सर ये 255 ऑक्टेट कहेंगे ना इनको सर हाँ 250 ऑक्टेट है. हाँ सर और जितने भी नंबर होंगे उनको नेटवर्क कहेंगे उतना नेटवर्क है सबनेट मास्क में अगर 255 है इसका मतलब इस ये नेटवर्क ऑक्टेट है ऑक्टेट और फुल है 0 अगर है तो तुम्हारा ये है होस्ट ऑक्टेट. होस्ट चाहे मतलब ओके. किसी में भी रहे फिर कौन सा में भी रहे मतलब तुम्हारा सबनेट मास्क में अगर 255 रहता है तो इसका मतलब होगा तुम्हारा नेटवर्क है जी सर फॉर और एग्जांपल 0 अगर रहता है तो फिर होस्ट. सर फॉर एग्जांपल में जैसे 10 है तो ये मतलब नेटवर्क है 10 नेट है नेटवर्क हाँ मतलब ये तुम्हारा ये देखो जो जो ऑक्टेट के नीचे 255 लिखा है ना आईपी हाँ एड्रेस के नीचे जी सर वही हो जाएगा तुम्हारा नेटवर्क. जी सर और जिधर पे 0 आ रहा है ओके जिस ऑक्टेट पे 0 आ रहे हैं वो आ जाएंगे तुम्हारे होस्ट. ये सर मतलब 150 से स्टार्ट हुआ 255 पे ख़त्म हुआ 10 पे स्टार्ट हुआ 255 पे ख़त्म हुआ एक ऑक्टेट हुआ सर ये नहीं ये सबनेट मास्क है. ये सबनेट मास्क डिफरेंट है ना. ये सर आईपी एड्रेस तो डिफरेंट है सबनेट मास्क डिफरेंट है. ऐसा कैसे ओके तो इसका मतलब ये नहीं कि 150 से स्टार्ट हुआ 255 पे खत्म हुआ इसका ये मतलब नहीं है. जी 150 ये तुम्हारा आईपी आईपी है. ओके ओके आईपी और इस आईपी पे तुम्हारा नेटवर्क क्या है मतलब तुम्हारा नेटवर्क कौन सा है तुम्हारा होस्ट कौन सा है इस आईपी पे इसको ही हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं. जी सर ओके तो कैसे हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं 255 जो हम लोग के सबनेट पास दिख रहा है ना इधर पे क्लास बी का जी इसमें पहला जो दो ऑक्टेट है ये बेसिकली क्या है नेटवर्क है. ओके ओके अभी कैसे नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इधर पे हम लोग क्या दिख रहा है वॉन्स दिख रहे हैं. ओके वन का मतलब क्या होता है नेटवर्क ऑक्टेट. ओके और 0 का मतलब क्या होता है होस्ट होस्ट. ये सारा नेटवर्क एंड होस्ट बीट्स है. ओके तो जब तुम ये सबनेट मास्क को कन्वर्ट करते हो बाइनरी पे तभी तुम्हें बेसिकली पता चलता है कि कितना बिट्स तुम्हारा नेटवर्क है कितना बिट्स तुम्हारा होस्ट का है. ओके तो डेसिमल को पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने इधर पे किया 255 मतलब 8 वंस 0 मतलब 8 zeros. तो 1 जो होते हैं वो हमेशा नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सबनेट मास्क पे और 0 जो होते हैं ये हमेशा होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके ठीक है तो उसी के पर्सपेक्टिव से जब भी हम लोगों को कोई भी आईपी मिलता है तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लास का आईपी है वो. ओके तो तुम्हें सबसे पहले यही फिगर आउट करना है कि ये आईपी जो है ये कौन से क्लास का आईपी है.
जब तुमने डिसाइड कर लिया कि ये क्लास बी का आईपी है, तो सिंपली उसी क्लास बी के सबनेट मास्क को अप्लाई कर देना है उधर। ओके, तो ये सबनेट मास्क पे जो जो तुम्हारे नेटवर्क ऑक्टेट्स हैं, जो जो तुम्हारे होस्ट ऑक्टेट्स हैं, वही तुम्हारे आईपी पे अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 20.90.0.1। अब इसके बारे में बताओ, ये कौन सा क्लास का आईपी है? कुछ क्लास आईपी इज दिस अंकित? यस सर। कौन सा क्लास का आईपी है? 255। नहीं, पहले आईपी। ओके हाँ ओके सर। ये कौन? क्लास क्लास ए ई। क्लास ए, ये लिखा हुआ है ना, देखो क्लास ए का आईपी है। क्यों क्लास ए का है? बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है लाइक कि जो क्लास ए का रेंज है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10.0.0.0। 10 से तो तुम्हारा प्राइवेट रेंज स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा जो फुल रेंज है। ओके, ये देखो तुम्हारा 1 to 126 है जो यूजेबल है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, यस सर गॉट इट। तो ये तुम्हारे इस रेंज के अंदर आ रहा है ना? यस सर। ये जो 20 है, ये तो इस 1 to 126 के अंदर आ रहा है, इसी वजह से ये तुम्हारा क्लास है। तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या कहता है? सर वो 1 से लेके 126 तक के जो मतलब कि फर्स्ट जो ऑक्टेट होगा उसमें 1 से 126 तक आएंगे। हाँ, लेकिन सबनेट मास्क क्या कह रहा है? कि सबनेट मास्क ये कह रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क है, यस सर। क्योंकि इधर पे सारे वंस है, तो ये नेटवर्क है। बाकी मतलब ये 20 जो हो जाएगा ये नेटवर्क आ जाएगा, और बाकी जो 3 है ये आ जाएंगे क्या? होस्ट आ जाएंगे, राइट? So 90.0.1 that is your host, and this is your 20 which is the network, right? So always this subnet mask is mandatory for configuration of your IP addresses. Without subnet mask you cannot configure IP address. कौन सा भी मशीन हो, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, तुम्हारे राउटर्स हो, तुम्हारे प्रिंटर्स हो, सर्वर्स हो, कौन सा भी मशीन, even your smartphone also, if you are not configuring a subnet mask with an IP address, then it is always considered as an invalid IP. Okay. So machines का subnet mask के ऊपर dependency इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें mandatory है, without which exactly they cannot recognize the machine's network and the machine itself on the network. Communication करने के लिए ये तो चाहिए, राइट? ये दोनों चीजें चाहिए। अगर तुम कुछ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंडिविजुअल को भेज रहे हो, तो फिर तुम्हें तो जाएगा कि वो इंडिविजुअल रहता किधर है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस क्या है, उसका पूरा नाम तुम्हें जानना पड़ेगा, फिर तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो। बट विदाउट knowing all these things, how come exactly you can send anything to that particular person? It's not possible. तो रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे भी अगर कंपेयर या कंपैरिजन करते हो, तो फिर यही तुम्हें बेसिकली चाहिए, एड्रेस चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए। ओके, तो यही तुम्हारे इधर पे नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए भी चाहिए। Whether we're talking about machines network or human network, always we need to identify all these things. So that is why this subnet mask is used. अभी मुझे ये बताओ कि 165.200.90.50 इसमें नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट क्या होगा? One 65 and 200 is the network part and 90.50 is the host part. Why 165.200 is the network part? Class B. Because class B sir. it belongs to class B and It belongs to class B. How come you can identify that is class B?
range. और रेंज क्या कहता है? Class B मिलेगी 128 to 191 is 191. class B. 128 to 191. What is class B? So that is your 165 coming in that range, right? Yes. Then we will write Correct. down the class B subnet mask, that is 255.255.0.0. So Correct. first is 255 network bit, then again 255 that is network bit. So Correct. first two octet becomes of IP address become network bits, and rest 0.0 become host bits. So last Host two, bits. Correct. All right. Now, 193.172.16.10. network host. So, which one will be the network here? 193 193, 172, 16, and 10 is 16. and 10 is host. the host part. Now, why this Because one is because only host? Sir, because because sir, it is it's class C, and class It C is is class C. So, and class how C is come it is subnet class mask. C? because coming in class C range that starts from 192 onwards. So it is a class C. Then we will write the subnet mask of class C, that is 255.255.255.0. So last one is the host bit. Correct. Like that only you have to identify. Very good. So, everyone got it? Yes sir. All of Yes. you? Okay, Yes now sir. take this enter screenshot. सर मतलब स्टार्टिंग की जो लिमिट होगी उससे ही आइडेंटिफाई करेंगे अपन कौन से क्लास का है हाँ, और obviously range से identify करना और है. कौन सा होस्ट Okay. कितने होस्ट है और कितने नेटवर्क है अपने. हाँ, ओके सर. मतलब तुम पहले तो ये रेंज को देखोगे. ओके, ये रेंज से ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास का है. अगर मान लो कि क्लास सी का है तो फिर क्लास सी के सबनेट मास्क पे अप्लाई कर देना. ओके, जिसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क होंगे, 1 ऑक्टेट आएगा होस्ट. अगर क्लास बी का है तो 2 ऑक्टेट आएगा नेटवर्क, 2 ऑक्टेट आ जाएगा होस्ट. ऐसा करके. ओके, now take the screenshot of this. Sir, there is one, sir, I have a query. Sir, there is one term network IP address where we have to multiply, and multiplication we have to do. Can you give that example, sir? Network ID, that is basic, that is coming in separate concept. Okay. And we calculate our host addresses, all this. So that is coming. Sir, you will Yes, be we'll discuss that. subnetting and supernetting for the topics, right, sir? Yes. These days we are Okay. doing subnetting actually most of the time in organizations. Okay. Supernetting is exactly the opposite process. Okay. Sir, can you give that example? How calculate that supernetting thing? Yes, we'll discuss that. Okay, when the topic would come. Okay. Now, take the screenshot, right? This one. सर ये जो सबनेट मास्क है तो ये प्राइवेट नेटवर्क के लिए भी सेम रहेगी लाइक सेम है इसीलिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क है. क्लास ए बी सी तुम्हारे प्राइवेट के उसके लिए भी अप्लाई कर सेम सकते ही है सब. सेम. ठीक है, राइट. Can I scroll down? No. Now we're moving forward. Next concept, CID. Now this one is much more easy concept. You have already understood your subnet mask. That is classless interdomain routing. It is, just think of it like an advanced way to represent our subnet mask. So whatever you are doing here, in this also you are doing the same thing, but in an advanced manner you are doing.
CIDR basically uses slash notation. Network bits in IPs means if you see these three examples, here we have written the subnet mask, right? 255.255.255.0, 255.255.0.0, 255.0.0.0. Our three octets, which is network, this is our host octet, right? These are our two octets, which is network. These are our two octets, which is host. And that is your one octet network, three octet is host. Can you see the same thing over here? The same three examples, right? Where is it? Yes or no? These three examples, we are having the same thing. But can you see that I am here only mentioning the number of network bits here? 255, 255, 255 bits. You 8 and 8 bits, right? If you add them together, you are getting what? How many bits? Class C. 24. 24. In class B, we are at what bits? 8 plus 8. 6. So that is your 16. And in class A, we are getting how many? 28. So that is your slash notation, which is what you see to represent only network bits in your IP address. Means here you don't have to mention your host bits. If you see your subnet mask here, that subnet mask always you have to write your network part and your host part, right? You have to represent it. But in CIDR, you don't have to represent host part. Your host bits automatically is calculated based on this formula. Every system knows that your IP address is how many bits? 32 bits, right? That is the overall length of IPv4 address. So when you are writing your IPv4 address, that is 13 bits, and you are giving slash 24, it means what? It is simply subtracting this 24, letting the remaining host bits automatically. So in this CIDR, we don't have to mention our host. What the host bits here? When you mention the slash notation after the IP address, whatever value you write after slash, that is representing the number of n bits in IP address. N bits network address. So n bits in IP, it simply indicates whatever value you write, whether it is slash 16, slash 8, these are all network bits. And when you mention your slash, system automatically is performing this calculation and they are figuring out the number of. So if you see our default sum, we are having in class 8 bits are network, 16 bits are network, 24 bits are network. That is class A. What is the value? Class A slash 8. 8. Class B Slash 16. slash 16. Class C. Slash 24. So all these values are Network what? bit. Network bit. Remember, these are default, right? Default CIDR, default subnet mask. Okay, always remember this. Understood this? Yes, sir. Any IP address, whether it's class A, class B, class C, whether it's private, when you are using slash notation, you just represent number of network bits. If it's a class C IP, write slash 2. Right, sir?
these days some companies are using okay IPv6 as well. So it's not like that your machine is using IPv6, okay, but in some okay, coming years we are going to be using it, so you must have an idea about IPv6. We'll be having that discussion in the next two sessions about it. Taken the screenshot, right? Everyone taken? अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन के लिए हमारे पावर्स ऑफ 2 टेबल तुम्हें चाहिए. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यूज करेंगे. तुम्हें याद रखना. Take a screenshot of it. Direct 24 after 2 is to power 16. हाँ 2:16 तक याद रख सकते हो. ये 2:24. ओके, इसके बीच में अगर याद रखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू